Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna improve your English at home. Yes, many of the students are requested me because they are need to improve your English and their exam is super close. So before that, if how can you improve your English at home if your environment is not in English? And this is the free speaking IELTS class, by the way. If you want to join our free speaking IELTS classes, then you can just log on to our channel. You need to subscribe our channel, and also you need to share this video and like this video with your friends. So this is how you can be eligible to get the free speaking classes with us. Now let's get started with the question which always students ask about how to improve IELTS speaking at home. So IELTS speaking at home के लिए आपको करना क्या है. I will give you all the tips and you can just practice on that. And also if you want to do practice with us, you need to follow our channel. And now let's get started. In today's video, I'm gonna show you about the tricks and tips for your speaking. How can you improve your speaking at home? During my IELTS speaking classes, so many students ask all these kind of questions. Then how can we improve our English? Because they don't have an improvement, or they do not have an environment and at home to talk to. So I want to show you that it is possible. It is extremely and exactly possible to improve your speaking at home on your own for free. Yes. So for that, what you need to do now, first thing I want you to do is to get a list of topics. सबके अपने अपने जो रहते हैं टॉपिक्स रहते हैं, फेवरेट टॉपिक्स. किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को शॉपिंग अच्छी लगती है. जस्ट फाइंड द इंटरेस्ट वेयर यू आर इंटरेस्टेड एट. ओके, जो भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी आपका स्पीकिंग का जो टॉपिक है जिसको आप सोचते हो, आपको मज़ा आता है सोच के और करके. सो स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हमारे पास 3 पार्ट्स रहते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. सो पार्ट 1 में क्या है? इफ़ यू डोंट नो and cannot find the list of your favorite videos or favorite things, then करना क्या है? आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है. बहुत सारी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ की जो क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ की लिस्ट भी डाली हुई हैं, क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ भी दिए हुए हैं. यू नीड टू गो एंड लुक एट इट. सो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा किस तरह के टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में आएगा. लाइक सो फर्स्ट थिंग, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ. लाइक सिलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक. सो आइल्स के अंदर बहुत सारे फेवरेट टॉपिक्स या बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो गया, होम टाउन हो गया, होम हो गया, वेदर हो गया, लाइक दिस काइंड ऑफ, राइट. तो फर्स्ट थिंग, सिलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक फेवरेट है. So here's the tip. I don't want you to write your answer on the paper or book or notebook. I just want you only to develop your idea. For example, if you choose the topic hometown, then you have to develop the idea like, where is your hometown? What is the favorite place in your hometown? What is the oldest place in your hometown? What So is there anything you do not like in your hometown? And our last question, next question is there any improvement needed in your hometown, or what is there for foreigners to do और सी इन योर होम टाउन? सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने डेवलप करने हैं. तो अगर आपको एक टॉपिक चूज़ आप कर लेते हो, सो दिस इज़ द एग्जाम्पलरी टॉपिक. तो अगर ऐसा है कोई एक टॉपिक आप चूज़ करते हो, तो उसके लिए आप 6 क्वेश्चन सोचिए कि मुझे इसके ऊपर सोचना है, राइट. सो what is you just think about it. These are the questions. So सबसे पहले जैसे वेयर इज़ योर होम टाउन, तो उसको आपने इंग्लिश में सोचना है. माई होम टाउन इज़ वेयर, कहाँ पे है, उसको लोकेशन उसकी बतानी है, कौन सी जगह के पास है, किस तरह से कोई बंदा बाहर से आता है तो कैसे वो वहाँ तक पहुँच सकता है. दैट इज़ अनदर आइडिया. सो नेक्स्ट, when you start developing the idea, you can use the topic with वर्ल्ड लिस्ट. लाइक सो सबसे पहले आपने वोकेबलरी सोचनी है उस टॉपिक के साथ रिलेटेड. जैसे कि आपका होम टाउन टॉपिक है, तो होम टाउन के ऊपर आपने अगर किसी एक चीज़ को बताना है, तो उस चीज़ के लिए आपको उसकी रेंज ऑफ वोकेबलरी जो है उसको पहले अपने दिमाग के अंदर लेके आना है. जैसे कि होम टाउन क्या है? एक नॉस्टैल्जिया, राइट. ए लाइक लॉन्गिंग फॉर पास्ट टाइम, जहाँ पे आप रहते हो, एक आपकी नेटिव प्लेस है, एक फैमिलियर जो आपके सीन्स हैं वहाँ पे, और क्लोज एसोसिएट्स है,
नेटिव प्लेस, राइट। तो इस तरह के जो वोकेबलरी के वर्ड्स है उसके साथ रिलेटेड, होम टाउन के साथ रिलेटेड, आपको वो अपने पास लिस्ट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स लेके रखनी है। एंड द सेकेंड थिंग आपने क्या करना है, देयर इज़ अ होल रेंज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स यू कैन सी ऑनलाइन, यू कैन फाइंड इन माई वीडियो ऑल्सो, और हर अदर वीक में मैं वोकेबलरी के वर्ड्स ज़रूर इसके अंदर वीडियो आइल्स चैनल के अंदर अपने अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर उसको एक बार देखें। सो इससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनर के सामने अपने टॉपिक को बोलेंगे तो एक ही वर्ड के साथ आप उसको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यू हैव टू यूज़ अ रेंज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स एंड इट विल बाउंस योर मार्क्स इन स्पीकिंग, बिकॉज हर एक सेक्शन जो यहाँ पे रहता है, वोकेबलरी, ग्रामर और पैराफ्रेजेस, एवरीथिंग इज इन 25% ऑफ द मार्क्स ऑफ योर स्पीकिंग सेक्शन। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, रिकॉर्ड योर आंसर्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि आपको राइटिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, यू नीड टू रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करना है, टेक योर फोन एंड रिकॉर्ड योर आंसर विद योर वॉइस, जो आपके वॉइस के अंदर अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होके, वॉल के सामने खड़े होके आप प्रैक्टिस करें, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट important. This thing is important. I will give you the reason, and that thing why that is important, I will give you that reason also. So इस reason के अंदर क्या है, rather than you write your answer, because when you write your answer you will focus on your vocabulary, you will focus on your grammar, you will focus always, you are focus on your nouns, pronouns, your verbs, and also you are focusing on the tenses, right? So the vocabulary, when you are saying, when you think more about vocabulary and more make less, and when you are more thinking about the vocabulary and speaking, then you make less mistakes. So when you start your practice, when you speak, it's direct. So when you record your answers, this will gives you a chance to find your weaknesses. It is very very important to find your weakness and work on that weaknesses. अगर आप अपनी weakness को find करके उसके ऊपर workout करते हो, then speaking will be very very easy. तो आपको ये पता चलेगा कि vocabulary में अगर आपने home town एक topic लिया तो उसमें आपने कितनी बार home town को use किया है, कितनी बार आपने same ही word को use किया है। अगर आप same ही word use करते हो, it will like give you a less marks. अगर आप ज़्यादा vocabulary words, range of vocabulary words use करते हो, then it will gives you more marks. So if you need any topics, vocabulary words, please write down in the comment section. I will definitely give you the range of vocabulary words, because हर vocabulary word की बहुत सारी ranges रहती हैं जिसको आप use कर सकते हो अपने topic के अंदर, और speaking जो है वो आपका topic है regular basis के ऊपर. So listen to your answer after the recording, then you have to listen to your answer. जो listening करनी है अपने answers की, तो listen to your answers के अंदर आपने क्या क्या देखना है, fluency कि किस तरह की आपकी fluency है, आपने vocabulary को check करना है, grammar को check करना है, और अपनी pronunciation को check करना है, which is very very important. आपकी फ्लुएंसी आपको कैसे चेक है, द एग्जामिनर विल चेक द सेम थिंग इन योर एग्जाम। वो आपके एग्जाम के अंदर यही चीज़ों को चेक करता है। 25% ऑफ योर फ्लुएंसी के रहते हैं, 25% वोकेबलरी के, 25 आपकी ग्रामर के, और 25% आपकी प्रोनाउंसिएशन के। तो इसके आपके 25-25-25% के मार्क्स रहते हैं, जिससे कि आपके हर एक सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एग्जामिनर जो है हर एक चीज़ को चेक करेगा, ही विल गिव यू 25% फॉर ईच एंड एवरी पार्ट. सो in my next video I will show you how you can work on that 4 parts: fluency, vocabulary, grammar and pronunciation. So agli video ke andar I will show you how to work on that. So in this video my main tip is, you instead of writing, you have to start developing, you have to start recording your answers and listen to them. After that you can find your mistakes and work on that mistakes. Okay, if you need my help in that definitely just let me know. I will give you the help as much as possible I can. But for that, what you need to do, you need to subscribe my channel, you need to like this video and share this video with your friends. Thank you very much friends, and best of luck for your IELTS speaking exam. And in my next video you can understand more about these 4 modules in 4 speaking criteria which examiner assess your speaking. Okay, so now